Hello everyone, good morning. Today in this lecture we'll discuss about next taxonomic aid museum. अरे म्यूजियम तो सबने देखा है, इसमें क्या पढ़ने का, सही है ना. सो म्यूजियम इज अ प्लेस विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, प्रिजर्वेशन एंड एग्जीबिशंस. अब देखो ये एक सबसे अच्छी स्पेस है जहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है एंड एग्जीबिशन भी होता है. उसका मतलब कि हम लोग वहाँ पे जाके उसकी विजिट कर सकते हैं. तो जैसे हमने देखा हर्बेरियम, तो वहाँ पे प्लांट्स होते हैं. बॉटनिकल गार्डन, तो वहाँ पे भी प्लांट्स होते हैं. जूलॉजिकल पार्क, वहाँ पे एनिमल्स होते हैं. बट म्यूजियम, वहाँ पे दोनों का स्टोरेज होता है, एनिमल्स का भी और प्लांट्स का भी. बट नो लिविंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, मतलब लिविंग प्लांट नहीं होता है, लिविंग एनिमल नहीं होता है, उसका प्रिजर्वेशन होता है. स्पेसिमेन आर केप्ट इन द कंटेनर्स और जार्स. मैंने पहले ही बोल दिया, ऐसा कंटेनर रहता है और उसमें मैंने बोला था प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं. कौन सा? फॉर्मेलिन. बेटा ये ध्यान रखना, जब भी कोई स्पेसिमेन देखो तो जार में जो भी प्रिजर्वेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेलिन. फॉर्मेलिन की वजह से ही अपना जो भी स्पेसिमेन है वो ख़राब नहीं होता, उसमें से बदबू नहीं आती एंड लॉन्ग टाइम तक वो एज इट इज़ रहता है. प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस में बी प्रिजर्व्ड एज अ ड्राई स्पेसिमेन. प्लांट्स का तो मैंने बोल दिया, हर्बेरियम. ओके. Even insects are also preserved here. Insects are collected, then they are killed. फिर उसको पीन किया जाता है और उसको रखा जाता है किस में? इंसेक्ट बॉक्स में. इतना इंसेक्ट बॉक्स आता है, उसमें वो प्रिजर्व किया जाता है. लार्ज एनिमल्स, दे आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय प्रोसेस दैट इज स्टफिंग. अच्छा, स्टफिंग क्या है? तो स्टफिंग मीन्स रिमूवल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. जो अंदर के ऑर्गन है उसको रिमूव करना है एंड वहाँ पे स्टफिंग करना है. किसका? कॉटन, वूल, प्लांट के ड्राई पार्ट्स, उसके ड्राई लीव्स और प्रिजर्वेटिव्स. तो दैट इज नोन एज अ स्टफिंग. इवन स्केलेटन ऑफ सम लार्ज एनिमल्स आर ऑल्सो प्रिजर्व इन वेरियस म्यूजियम. म्यूजियम, कुछ म्यूजियम में स्केलेटन भी होते हैं. वडोदरा में भी एक म्यूजियम है, राइट. इवन एक डायनासोर पार्क भी जैसे म्यूजियम ही है, बालासिनोर गुजरात में. तो वो म्यूजियम भी, डायनासोर वाला म्यूजियम भी देखने लायक है, जहाँ पे डायनासोर के फॉसिल से उसके एग सब प्रिजर्व किया है. It preserves algae, fungi, mossy spawns and a part of gymnosperms since they can't be kept in herbarium. मतलब कि जो चीज़ हर्बेरियम में नहीं रख सकते वो यहाँ पे म्यूजियम में हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. ओके, तो ये हो गई बात म्यूजियम की. चलो मैं आपको उसका भी वीडियो बता देती हूँ.
insect collection is a science and educational project. Many students does that in their school and college life. Many people also took it as a hobby and preserve insects. I got this praying mantis on my house staircase. I caught it in a jar. To convert this jar into a killing jar, I took some surgical spirit in a cotton, put it inside the jar, and then tied the cap and keep it for around 2 hours aside. After 2 hours, I opened the jar to take the insect out. Then took a thermocol, which is a little bit bigger than the size of this insect, and cut a V-shaped trench at the middle. With the help of a tweezer, I placed this insect at the center of this trench. First, I use a pin to prick through the body of the insect to the thermocol to fit that first into the thermocol. Then I use other pins to give a proper shape by stretching the legs, all the 6 legs and the antennas. This is how the full insect was pinned. Then I kept it inside a box and keep it around for 2 days to dry it up. After 2 days we opened. You can see here this insect is fully dried. Then I gradually and slowly open all the pins, and then I hold the center pin only, which I didn't removed. You can see the insect is fully dried. Now to frame it up, I have used just one thermocol piece. You can use any other kind of frame, but this is a very simple process to make your own frame at your own home. I cut this frame in such a way that it looks like a box frame. Very simple, made 4 wall and just glued it on top of the base. Then place the insect inside. To cover it on the top, I have used a thin plastic paper, a transparent plastic paper. I cut into a small size and glued on top of it. To have a tight finish, a straight finish, what I used a hot air. I used a hair dryer and put hot air to give it a nice straight finish on the top. And then actually I used some black tapes
to make a border around it. Now this is how the final look. Basically what we start with is somebody brings in a dead bird, which is what we call a salvage bird. So we're looking for if there's feather molt, if smaller than it should be for that species, so we take certain types of measurements. And what we're doing is we're pretty much the more information we hold for researchers who may be studying a certain species, or even for students who may have an interest in drawing a certain species and all the differences within that species. So basically taxidermy is creating a life follow, but what we do is we create round skins, meaning we've cleared out everything that was for research use, not necessarily for how pretty it looks.